हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम अंकित सर और आज हम अपना जो लास्ट का टॉपिक बाकी रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड वो आगे बढ़ाएंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड में नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और यू कैन आल्सो से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ओके, तो क्या है ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? This is nothing but this is the path along which a unit positive charge will move if it is allowed to do so. मतलब हमने कोई चार्ज रख दिया इधर, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी इसके रीजन में। क्लियर? तो यहाँ पे अगर मैं कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दूं, when I will leave it, okay, the direction in which it will move, that is the electric field line, right? So it is the path of a unit positive charge in which it will move when we are allowing it to do so, that is electric field line. Okay, so now let's place this charge at the origin. Okay, now what I'm doing, I'm placing this charge at the origin. Now let's draw the vector, electric field vector. ओके, अगर यहाँ पे मैं कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो वो कहाँ जाएगा? दिस डायरेक्शन में। सो दिस इज द डायरेक्शन, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यहाँ पे रखूंगा तो दिस डायरेक्शन, यहाँ पे दिस डायरेक्शन, यहाँ पे दिस डायरेक्शन। एंड ड्रॉ द वेक्टर लेंथ ऑफ द वेक्टर अकॉर्डिंग टू इट्स मैग्नीट्यूड। राइट, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी उतनी वेक्टर की लेंथ ज्यादा होगी। अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पे लगू यूनिट पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन इन दिस वे, बट नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर विल बी वीकर कंपेयर टू हियर। सो लेट्स टेक दिस, ओके, यहाँ पे रखूंगा तो इससे भी कम होगी। Similarly, I can draw in this way also, this direction. Okay, so see what you can observe. You can observe that the length of the arrow decreases as we move far. This is because as we move far, the strength of electric field decreases. Okay, so now when I join this line, then I get this figure. So these are the electric field line. Okay, when I join this line, I get the electric field line. Okay, when I'm connecting these arrows, okay, then I get this. These are called the field line, and this will be the direction. We have studied in the points related to electric field that for positive charge it is radially outward. Okay. Now the electric field, you can also depends on the density of electric field line. The magnitude of electric field that depends on the density of electric field line. अगर मैं देखूंगा तो ये अगर मैं एक्सटेंड करूं, this will be electric field line. If I am taking same region, an equivalent region here, okay, I can see that the number of field lines here are denser compared to this. So higher the density of electric field line, higher the magnitude of electric field. Okay, so electric field is stronger near the positive charge, near the charge. So near the charge, the electric field lines are denser. See, the number of electric field lines is not important, right? There can be infinite number of electric field lines, right? But the relative density is important. Clear? So this was about the electric field line. Now let's
ड्रॉ फिगर ऑन अ प्लेन। ओके, मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की फिगर ड्रॉ करता हूँ। लेट्स कंसीडर इट एज एन 3 dimension and I'm drawing it on a plane. Okay, so this will be the picture of a electric field line. Okay, आपको पता है कि electric field, okay, that decreases with r square, that is inversely proportional to r square. जैसे distance बढ़ाएंगे, electric field decreases as 1 by r square, but the area enclosed that increases. ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल, इधर का कोई एंक्लोज्ड एरिया लूंगा और इधर का कोई एंक्लोज्ड लूंगा, द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लूंगा मैं, तो क्या होगा कि यहाँ पे एरिया कवर ज्यादा होगा इसके कंपेयर में, राइट? सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिक्रीजेस विद आर स्क्वायर एंड एरिया इंक्रीजेस विद आर स्क्वायर। ओके, नाउ व्हेन आई टेक 2 पॉइंट्स, ओके, कोई भी पॉइंट ले लूंगा मैं, 2 पॉइंट इधर पे एरिया पे, क्लियर, कोई यूनिट एरिया, नॉट यूनिट, सेम एरिया, तो उसमें हमको पता है कि द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, राइट? मींस द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल डिसाइड द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इधर 2 एरिया ले लूंगा सेम, ओके, then you can see दोनों सेम साइज के एरिया में लिखूंगा P and F, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है, that means the electric field is stronger here and the electric field is weaker here. Okay, now with this picture we will prove that E is proportional to 1 by r square. Okay, now what I am doing, I am taking this area, okay, P1 और दिस एरिया P2, मैंने ये दोनों एरिया ले लिए, ओके, एरिया P1 एंड एरिया P2। सी, दोनों में मैं देखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सेम, इधर से जितनी आएगी यहाँ पे उतनी ही है, क्लियर? ओके, लेट दिस सॉलिड एंगल बी ओमेगा, ओके, let this solid angle be delta omega, क्लियर? ये एंगल मैंने ले लिया डेल्टा ओमेगा। अभी सॉलिड एंगल की फॉर्मूला क्या है? द एरिया इंटरसेप्ट अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हो गया एरिया इंटरसेप्ट इसका अपॉन लेट्स से r1 स्क्वायर, दिस डिस्टेंस एट दिस पॉइंट आई एम टेकिंग एज r1 और ये डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ r2, तो इसका जो एरिया इंटरसेप्ट है, राइट, सॉरी, जो सॉलिड एंगल है वो a अपॉन आर स्क्वायर, इसका मतलब दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा ओमेगा इनटू r1 स्क्वायर, क्लियर? लेट्स से a1, और अगर मैं इसके फॉर्मूला लगाऊंगा तो डेल्टा ओमेगा तो सेम ही है, राइट, लेकिन वहां पे आएगा a2 बाई r2 स्क्वायर, तो उसके वजह से a2 will be equal to delta omega r2 square, right? So the area intercept here is delta omega r1 square and area intercept here is delta omega r2 square, और दोनों में मैं ले लेता हूँ नंबर ऑफ फील्ड लाइन सेम है, आई एम टेकिंग दैट नंबर ऑफ फील्ड लाइन is equal to n, क्लियर? कौन से एरिया में? ये टोटल एरिया में, ओके, बट इफ आई वांट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया, इसके यूनिट एरिया और इसके यूनिट एरिया में फाइंड करूंगा, ये जो n है वो तो इसके टोटल एरिया और इसके टोटल एरिया, दोनों एरिया अलग अलग है, बट इफ आई वांट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ फील्ड लाइन, ओके, सो एट P1 the number of
field lines per unit area will be equal to A by N. A1 by N. So this will be equal to delta omega R1 square by N. क्लियर? मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस N, A1 एरिया में N है तो 1 में कितनी? सॉरी मैंने थोड़ा गलत लिख दिया. दिस इज N by A. Clear? By this formula for A, it is N. For unit area, how much? Clear? तो unit area में कितनी आएगी? So this will be N upon A1 क्या है? Clear? Similarly, number of field lines per unit area at P2, मतलब इस पोजीशन पे, तो क्या आ जाएगा? N by डेल्टा ओमेगा R2 स्क्वायर. ठीक है, दोनों केस में व्हाट इज N? द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन एंगल्स. सो N दोनों में सेम है, सॉलिड एंगल दोनों के में सेम है. सो आई कैन राइट डाउन दैट नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर एरिया इज प्रोपोर्शनल टू 1 by R square. और द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्या डिटरमाइन करता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो आई कैन से दैट magnitude of electric field depends on number of field line, and that is depending on 1 by R square. So electric field is directly proportional to 1 by R square. Okay, so this picture was invented by Faraday, right? He called it as line of force, but actually it is a misleading term. So the better word is field line rather than line of force. Okay, so just go through this topic. I am repeating once again that I have drawn the picture in two-dimensional. Here, when I am taking two planes P and F of equal area, then you can see that here field lines are more crowded compared to here, so the electric field here is higher. So using this picture, we will find out now E is proportional to 1 by R square. Now I am taking two areas, one is P1, another is P2. So the angle, solid angle will be equal to A by R square. So from that we determine the formula that the area intercept here is delta omega R1 square and area intercept here is delta omega R2 square. Okay, and the total number of field lines we are assuming that there is n number of field lines. Clear? और दोनों में same है. So total is n. So for area A it is n. So for 1 how much? So this will be equal to n by A. ये हो गई यूनिट एरिया में. तो P1 में आ जाएगा n by A1. So n upon delta omega R1 square और P2 में n by delta omega R2 square. Right? So इसमें n दोनों में सेम है, सॉलिड एंगल दोनों का सेम है. So it is directly proportional to 1 by R square. The number of field lines per unit area directly proportional to 1 by R square. So the number of magnitude of electric field lines proportional to number of field lines per area, and that is proportional to 1 by R square. So E is proportional to 1 by R square. And this concept, this picture was developed by Faraday. He called it as line of force. But this is a misleading term. The better term is field line. So electric field lines are a way of pictorially mapping the electric field around a configuration of charges. मतलब when there are more than charges, then when there is a electric field line in the form of a curve, मतलब electric field line इस तरीके से दी है, right? So the electric field line is the tangent at this point. Okay, so electric field line are the tangent. So
If a unit positive charge is placed here, it will move in this direction. If it is placed here, then it will move in this direction. Okay, so this was about electric field line. The next topic is characteristic of electric field line. So in characteristic of electric field line, the first point that we have already studied, that if I take a positive charge, okay, let's say here, if I take a positive charge, then the electric field lines are radially outward. Okay, but if I take a negative charge, then electric fields are radially inward. Okay, this we have already studied. So the first point, if we are taking positive charge, then electric field lines are radially outward, and for negative charge, the electric field lines are radially inward. Okay. Now next, the pictorial diagram. When there are two positive charges or one positive and one negative charge. So see what will happen if I take this positive charge and near to it another positive charge. Okay. So we have studied that it is radially outward. But in this direction the electric field will be here, and for this it will be here. Both are in opposite direction. So it will show a mutual repulsion. Okay, so see, this will show a mutual repulsion. When there will be two positive charges, this give a pictorial description about the mutual repulsion. But if I take a negative and positive charge, let's say this is positive charge, this is negative charge. Then for positive charge it is in this direction, radially outward, and for negative it is radially inward. Right? So the diagram will show mutual attraction. Okay, so this will be the pictorial diagram where we are taking a dipole, right? A positive charge and a negative charge. Clear? So this is the diagram where there is a positive and negative, it shows the mutual attraction, and when there are two positive, it shows the mutual repulsion. Okay, there are also some other general properties like this electric charge, sorry, electric field line, they start from positive charge and end at negative charge. Okay, electric field line starts from positive charge and end at negative charge. Okay, electric field line does not form a closed loop. So this is not a closed loop. Both are having see. If it will be in this way, then I can say it is a closed loop. So electric field line never forms a closed loop. Later you will study that when you are studying about magnetic field line, they form a closed loop. Okay, it always ends at any positive charge at or negative charge at right angle. Okay, then electric field line never intersect. See, here you can see that they are not intersecting. Even in this case, these electric field lines are never intersecting. See what happens if electric field line intersect. Let's say these are the two direction of electric field line. So at this point, if I take a vector, this will be the direction and this will be the direction.
So at this point you can see there are two directions of electric field line. That is that is not possible. So electric field line never intersect. Okay, and electric field line do not passes through the conductor. Clear? So these are the points of characteristic of electric field line. Okay, so let's go to the points of characteristic of electric field. Okay, so that's it for today. That was total about electric field line. Okay.